Good evening. I've joined. Good. Okay, great. So, first of all, thank you very much for being a part of this session. And doctors and mental health is an issue जो कि ना तो कभी बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया, ना जिसके बारे में कभी बहुत ज्यादा बात हुई. And we have two very eminent speakers. Dr. Rakesh Khandelwal. Dr. Rakesh Khandelwal is a senior, psychiatrist, and he's somebody whom we always look forward to in sort of difficult situations. Somebody who has got excellent communication skills, and for the last 30 odd years, he's been, working relentlessly in this field. And the other speaker is Dr. Vipul Khandelwal. You know all of him. All of you know him, and Dr. Vipul is the medical director. Why we took this topic was because हमने देखा कि अभी इन दिनों में we all went through a lot of stress, and we've been talking about mental health issues among doctors. एक बात खंडेलवाल सर, डॉक्टर विपुल, मैं आपको और टू सेट द पर्सपेक्टिव कर दूं कि एक बहुत सारी स्टडीज इंडिया में हुई हैं जहां ये भी देखा गया है कि डॉक्टर्स की जो एवरेज लाइफ स्पैन है, which is sort of less than a normal Indian. So warm welcome to all of you. So आज जो पर्सपेक्टिव है डॉक्टर्स एंड मेंटल हेल्थ, उसमें बेसिकली जो प्रमाइस है वो ये है कि अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल आया पिछले 2 साल पहले, जो इंडिया के बहुत बड़े एक मेडिकल कॉलेज से आया था, और उसमें करीबन 445 डॉक्टर्स का रिस्पांस रिकॉर्ड किया गया, जिनमें मैक्सिमम रेजिडेंट डॉक्टर्स थे. करीबन 77% रेजिडेंट डॉक्टर्स थे. और ये देखा गया कि उसके अंदर 90% जो डॉक्टर्स थे, they had reported burnout, 30% reported depression, 67% reported moderate stress, 13% reported high stress, and 16% reported, bodily harm. So, firstly, Khandelwal sir, what are the, is this picture realistic? कि डॉक्टर्स के अंदर जो स्ट्रेस और बर्नआउट है, इट इज सो वेरी कॉमन, और इज दिस अ पर्टिकुलर स्टडी? दिस स्टडी इज फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैनॉट, इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में हुई है. सो व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस होल सिचुएशन? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. डॉक्टर सचिन, जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो स्टडीज आई हैं, all of them have reported stress, anxiety, depression in about 1/3 to 2/3 or more in the medical personnel, resident doctors, consultants, other paramedical staff. जो भी स्टडीज हैं, जो चाहे इंडिया से हैं या आउटसाइड से हैं, वो सब कोरोबरेट एक ही चीज को करती हैं. तो इसलिए इट सीम्स कि ये जो डाटा हैं ये रियलिस्टिक है और ये जेन्युइन है, एंड दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना. ये पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं डाटा, तो दे आर वेरी क्रेडिबल एंड रियलिस्टिक. और जो हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, है ना. आई हैव बीन इन दिस एपेक्स हॉस्पिटल फॉर 20 years, है ना. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 25 years. तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस डाटा को कोरोबरेट करता है. So, Dr. Vipul, corroborating with the data, I'm sure a lot of doctors, friends, colleagues, senior, juniors come to you. 30% of doctors having some sort of mental health issue. Is it alarming, or do you also feel that there is some sort of undercurrent and the reporting is very less? What do you feel as a practicing physician? Because मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग शायद साइकेट्रिस्ट के पास या
जाने से पहले I think they would first like to talk to a physician. So, as correctly pointed out by you and Rakesh boss, this is a widely prevalent problem, and we have various sorts of problem. People might not come directly for consultation to me or to a physician or to a psychiatrist, but when you look around at your colleagues, you listen to what they are saying, you observe them, you see their gestures, you see what are they going through, you listen to them in some other context, you can very well find out that this is the situation going on. And I think that it is something much more than 30% in our scenario or what we are facing day in and day out. So these figures, as we all know, what you have quoted, they were from PGI Chandigarh, and the burnout was up to the extent of 90% in this study. Amazing. So 90% means every 9 out of 10 doctors is having a burnout. So for the sake of the audience, we all know what anxiety, depression, and stress is. I found one definition of burnout. If you permit, I should read it out. Sure, sure. So burnout is defined as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment that can occur among individuals who work with people in some capacity. And it is considered to be outcome of long-term exposure to occupational stress. So this is the definition of burnout. So there is an emotional exhaustion, 90%. I cannot quote a data of our colleagues, but I'm sure if not 90, at least it must be around 60 to 70%, even in our scenario, if we consider this emotional blackout. So मैं फिर से खंडेलवाल सर के पास जाऊंगा कि and both of you can sort of can comment on it. So मुझे लगता है कि जैसे physician है कोई, तो खंडेलवाल सर would he come to you as कि बॉस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या मतलब what is the subtle terms that they use, क्यों आते हैं आपके पास, मतलब when do they seek help और किस pretext पे they seek help? जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है जिसको लेकर के जो कलीग्स जो है वो हेल्प सीख करते हैं, वो स्लीप डिस्टरबेंस है। सर आजकल रात को नींद नहीं आती है, नींद चालू ही नहीं होती है, रात को 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है। So this is the most common symptom by which a colleague connect with us. Okay. Then the second most common symptom is headache. Okay. तो आजकल headache रहता है। Third the most common symptom is exhausted, energy नहीं है। And fourth other is non-specific aches and pains. हाँ, कुछ भी हो जाएगा। तो ये common symptoms है, these are the common symptoms जो कि हमारे colleagues report करते हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का। फिर जब व्हेन वी गो डीपर, वी टेक हिस्ट्री, वी डू अ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, देन वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव और एंजाइटी इलनेस और दे आर गोइंग थ्रू अ बर्नआउट। सो डॉक्टर विपुल, मतलब ये 3-4 चीजें राकेश सर ने बताई, इसके अलावा do you want to add something that this is how people or colleagues, doctor colleagues would come to you, or so is there any apart from the apart from these symptoms, I have observed another symptoms. People start saying, at least the doctors start saying, that they are not interested in working today, right? Okay. All of a sudden somebody will say, yaar aaj man nahi hai raha kaam karne ka, for no good reason. Without any definite reason, they will start feeling lack of interest in their work. This may happen very early in the morning when you have just come, you are supposed to be fresh that time, and suddenly you feel like you're not interested in working. First thing. So these are the symptoms apart from what boss has already enumerated. Secondly, you can also observe sometimes, right? Even if they do not say, if you're working with them, you'll find that they are not working. Somebody who was supposed to do the work efficiently, you'll find some lapses in patient care. You'll find something which was very trivial they are missing, which they were not supposed to miss, right? Or Vipul, you are on mute. Or with the patients or other caregivers, they get irritated very easily. So these are some clues which help us to identify that something somewhere is going wrong.
So Vipul, in that paper it said ki, there are a few things जो stress या burnout create करते हैं, और एक चीज ये था कि long working hours, which was like when uh, I think 60 hours उसमें define कर Yes, रखा yes, है 60 hours per week. per 60 More hours than per 60 week. hours per week. Per week. More than Yes. 60 hours per week, and more than 2 night duties in a week. Yes. So Yes. this is one scenario where it was written कि जिन लोगों के ये काम ज्यादा हो, but so suddenly मतलब ये जो आज से 20 30 25 साल पहले, भाई आज भी if you see every year the kids giving PMT and NEET and everything is growing in numbers and whatever, and the world is the whole of the world wants to become a doctor or whatever. But what has suddenly changed in the last few decades or whatever, that suddenly we have come to this level where जो व्यक्ति is responsible for the health of the society, उसी की mental health बहुत ज्यादा affected है. So, boss, what I feel, it is not a sudden change. It has been a gradual change over a period of years, right? If you notice now, very young, bright students, when they clear their pre-PG, even toppers tend to take non-clinical branches, or say in which the patient interaction is less, in spite of the fact that they can get anything what they want in their post-graduation. People are opting for branches like pathology, microbiology, With all scaling. due respect to them. Yeah, of course. I'm just talking about the patient interaction. I'm not saying that these are inferior. I've never used the word inferior. Absolutely. I was just clarifying. What I mean to say, people are trying to find ways in which you have minimum interaction with the patients, right? Minimum interaction of patient, or basically time की भी एक limitation. Yes. So if I am giving a choice that you work in an ER or you work in a lab, of course, both things are good and both are important for patient care. I might choose just because I have a less patient interaction. Seeing the scenario nowadays, what is happening, a lot of pressure, a lot of expectation from the patients, and so many allegations. You see the situation of doctors, what they are facing, the stress of the clinical jobs, the long hours, as you said, the night duties, on calls. Actually, a clinician is feeling that they are 24/7, they are on call. Even if they are resting in their room or their hostel, they are somehow connected to the patient, maybe by phone or by a call, and they are something is going on in the mind which is continuously there, even apart from their working hours. This might not be in other professions, but when you take medicine as a profession, you become a doctor and you deal with patient care, you are engaged 24/7. Even I talk about myself, when I go on a leave, my phone, as soon as I switch it on, patients don't know that I am on leave, right? So everybody starts ringing me. Sometimes even it's natural that you get irritated. यार क्या छुट्टी पे भी तुम मुझे फोन करो. Naturally, he is not at fault, he doesn't know. So these situations tend to increase day by day. The connectivity has become very easy. Earlier, it might have been very difficult for the patients to talk to their doctors. Now it is so easy. You have to respond to them. Social media has its role. People will ping you on WhatsApp. They expect a quick reply. So even when the doctors are off duty, somehow or the other, partly they are on duty actually. So the number of working hours has actually increased. And looking at the scenario, the indifference of the society, I think these things have gradually increased. So, Madam Vipul, you normally know I'm a very stickler to the time, and खंडेलवाल सर, मैं ये कहूंगा कि आप दोनों जने आज टाइम की तरफ नहीं देखें. मतलब I have gone through a lot of social media and research and everything, Vipul. There is hardly anything even on the social media which talks about doctors and mental health. So मैं मतलब this episode हो सकता है आज 25 लोग 30 लोग देख रहे हो, और YouTube पे हो सकता है 5-7 लोग देख रहे हो, but I tell you, the message has to go to the society that this is something that maybe will concern our future generations a lot. So Khandelwal sir, what do you think has changed so Dr. Vipul has said long working hours and lot of expectations and whatever it is.
So मतलब is there anything else that has changed? मैं क्योंकि आप एक नॉर्मल पेशेंट को भी देख रहे हैं और एक डॉक्टर को भी देख रहे हैं. Is it that society has moved and the doctors as a part of the society has moved, या डॉक्टर के साथ कुछ अलग हुआ है इसमें? Khandelwal sir, you have to unmute. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? तो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है. अब आ रही है, तो थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. है ना? मैं यहाँ EICU से ही बोल रहा हूँ अभी. अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सीलेंट. चलिए. हाँ, देखो सर, क्या है कि एज वी नो 1/3 ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, अगर अपन इफ यू टॉक अबाउट द जनरल पॉपुलेशन, सफर्स फ्रॉम some kind or other of psychiatric illness, है ना, including psychotic disorders, depressive disorders, anxiety disorders या drug addiction. तो वो जो एक biological vulnerability है जो कि जनरल पॉपुलेशन में है, that is carried to doctors also. So we can expect that 1/3 of the doctors will have some kind of the other psychiatric illness. Okay. अब जो psychiatric illness है, there is a biological vulnerability and then the superimposed stress, which the symptoms and which defines the severity of the illness. तो क्या है कि जो शायद illnesses जनरल पॉपुलेशन में माइल्ड सिवियरिटी की होती, वो डॉक्टर्स के अंदर एडिशनल स्ट्रेस के कारण दे हैव बिकम मॉडरेट टू सीवियरली इंटेंस. तो ये भी एक रीजन है कि द इलनेसेस जो जनरल पॉपुलेशन में माइल्ड होगी, वो डॉक्टर्स में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सपोजर टू स्ट्रेस वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी की हो जाती. दूसरा अगर अपन देखें, what has changed over last 20-25 years, 25 years I have been seeing, what has changed is the social support. पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो फेस टू फेस जो है उठना बैठना, मीटिंग, पार्टी, चैटअप, ये सब होता था. Even in the hospitals during lunch hours, all of them will sit together, they will talk, they will discuss what's going on, what can be done, किसको क्या difficulty है, what help can be offered. The social media, people hardly connect face to face with each other. This is one of the most important reason which is happening these days. The social support is going off. So Vipul, coming to you, उस स्टडी के अंदर एक दो चीजें कही थी कि स्ट्रेस तो एक चीज थी, उसमें कहा था कि पीपल, जब उन्होंने रिक्रिएशन की बात करी तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर डूइंग, so internet surfing was the biggest recreation that people said, and going to the gym or playing sports or reading books or whatever. इनफैक्ट थोड़ा सा आगे स्टडी में ये भी कहा गया है कि सीनियर फैकल्टी में कम था बिकॉज दे वर रीडिंग बुक्स. सो बॉस ने उसको कॉर्पोरेट करा. इट इज सो, मतलब डू यू वांट टू ऐड दैट एज यंग डॉक्टर्स यू हैव सम स्टूडेंट्स आल्सो DNB वाले आपके साथ, सो 20 years hence when you were doing medicine, and so what has changed in student life, because you see students also very very closely, so what has changed in the student life 20 years में? मतलब ऐसा क्या हो गया कि जो स्ट्रेस है वो उनके पास ज्यादा हो गया, या जो उनकी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है वो कम हो गई? मतलब आई एम श्योर स्ट्रेस उस टाइम भी होता होगा, बट हाउ the stress of 2002 when, or 2001 when Dr. Vipul was doing his MD, how is that stress different from 2023 when Manoj is doing his DNB? So I think if you talk about the working hours, they were probably the same that time and now also. Even if you talk honestly, if I say honestly, in my first year PG, I did not see an evening outside the ward, full year.
I don't know how an evening at that place used to be outside the hospital campus, right? So things are even the same now. What I think, as Dr. Rakesh pointed out, the social media has now made a virtual world around you, and it has destroyed the original or the actual world. Okay. So, if I'll take you a very simple example. If it's your birthday today, you'll have more than 200 messages on your social media, right? How Yeah. many people ring you or come to your place and wish you a happy birthday? That you can count probably on your fingertips. 5 Same is same maximum. is same is with every other festival. Earlier there was no social media. We didn't even have a mobile phone. So we used to gather together, as Dr. Rakesh pointed out. We used to hang out together. We used to go out for movies. I think everything has vanished now, and it is all just this 6 by 3 inches device in your hand, which is quite good if you use it wisely, but probably it is more harmful than being useful. This is one of the main things I think. Okay, so this question is specifically for Dr. Khandelwal. उसके अंदर एक बहुत important issue था substance abuse. So use of alcohol and use of tobacco was said that impairs or that affects the burnout, depression, anxiety, all the mental health issues. So do you see, or do the studies say that this is any different than what is there in the general population? What is your comment on that, Khandelwal sir? या नॉर्मली सोसाइटी में इसका यूज बढ़ गया इसलिए डॉक्टर्स में भी बढ़ गया? सर देखो, एक तो क्या है, अल्कोहल और टबैको तो पहले से भी था, है ना. इट हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर लास्ट से 50 इयर्स, है ना. लेकिन अब क्या है कि द अदर ड्रग्स, दे आर नाउ more easily available, and the drug dependence of other things beside alcohol and tobacco is increasing by leaps and bounds in the medical professional. Okay. सबसे ज्यादा अगर अपन देखें बेंजोडाइजेपिन अब्यूज, एवरी सेकंड डॉक्टर जिससे मैं बात करता हूँ, अरे यार रात को मैं तो लोराज़ेपाम खा के सोता हूँ भाई, मैं तो दोपहर में ही अल्प्राजोलम ले लेता हूँ, मेरे को तो इतना स्ट्रेस हो जाता है पेशेंट देखते देखते, दोपहर में ही अल्प्राजोलम ले लेता हूँ. तो एक तो जो है ये जो नए किस्म के अब्यूज हैं, दे हैव इंक्रीज्ड, स्पेशली बेंजोडाइजेपिन अब्यूज, ये बहुत ज्यादा हो गया. दूसरा कॉरेक्स अब्यूज, ओपियोइड अब्यूज, कैनाबिस अब्यूज भी जो है इट इज इंक्रीजिंग अमंग डॉक्टर्स. तो ये जो नए किस्म के अब्यूज हैं, ये दे आर डिस्ट्रॉइंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द डॉक्टर. इससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है और सोशल ऑक्यूपेशनल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट हो जाती है. फिर ये सारा ट्रायड जो है इट लीड्स टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस देन लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड देन फर्दर डिटेरियोरेशन इन योर परफॉर्मेंस. फिर द मोर स्ट्रेस मींस मोर ड्रग अब्यूज व्हिच लीड्स टू फर्दर डिटेरियोरेशन, मोर. फिर ये जो है एक फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर डॉक्टर उसी के अंदर उलझ जाता है. तो ये जो नए अब्यूज हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स के अंदर, which is very alarming and very dangerous. And I have seen many doctors जो suffer from psychiatric illness as a outcome of drug abuse. Dr. Vipul, probably you would be better. I would come to you first. और उस स्टडी में ये कहा था कि almost 90% residents कभी ना कभी verbal abuse या violence, and almost 30% of the junior doctors, and quite a high percentage, 7 to 10% of the senior doctors also said that there is a verbal or physical abuse happening to them in their lifetime. And वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है. मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई वांट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू. एंड वो कह रहे हैं कि जब स्ट्रेस में होते हैं तो पीपल हैव रिपोर्टेड that they have made
some life-threatening lapses because of stress. So, Vipul, I want you to stress upon this part that एक तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को ठहराया जा रहा है कि आप if there is anything wrong that happens to a patient, you are responsible, and then suddenly there is a study that is coming up and that is saying कि जैसे जैसे फिजिकल अब्यूज होता है और उस स्ट्रेस के कारण गलतियां और बढ़ती हैं. सो मतलब एटलीस्ट रेजिडेंट्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए, इनफैक्ट जो इमरजेंसी में आप जैसे फिजिशियंस आईसीयूज जो हैं जो संभाल रहे हैं उनके लिए और ज्यादा प्रिकेरियस सिचुएशन हो रही है. विपुल. So, boss, I think over time, two things have occurred over, say, 10, 15 years, right? Number one, the respect what doctors had or 15 years back, that has changed dramatically now. We'll not go into the reasons why. So, for example, 20 years back, say you had some problem and you had to consult a normal doctor or a physician of your nearby neighborhood, whosoever he or she was, or maybe you're going to a government hospital. I am sure you did not have the guts to open your mouth other than your illness, right? Number one. Now you see the scenario, things have been these, the line of demarcation between the patient and the doctors had thinned out and actually vanished at many places. Number one. Number two, the medical science has advanced so rapidly, so fast, that the expectation of people has risen to the sky. Now, they expect that everything has to be cured, everything is curable, and if the patient is under your care, you are bound to cure that patient without understanding the pros and cons of the situation, without understanding that there is always a good chance that the patient might not come out in spite of your best efforts. This is not being accepted in the society, which was earlier accepted, say 10, 15 or 20 years back. This leads to violence or abuse or some hot talks. Now, naturally, it is not only with residents, even consultant level in our ICUs, in our critical cares, in our ER especially. These are the areas where a lot of action drama is happening every day. So naturally, if you are working with such an atmosphere, if I have a hot talk with you and immediately I go to see a patient, my mind is preoccupied with the fight I had with Dr. Sachin, right? How am I going to do my best with the patient I see after 5 minutes? It is not very easy for my mind to settle down. That is why there are lapses in care. मैं एक चीज कह रहा हूँ विपुल, मतलब जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ. You are there in the API and boss is there in the psychiatric society. आप critical care में भी active हो. कभी मतलब हायर लेवल पे कभी ऐसी बात क्यों नहीं हुई कि यार मतलब कोर्ट में जजेस को या ब्यूरोक्रेट्स को ये समझाया जाए कि देखो आप कह रहे हो कि आप गलती कर रहे हो इसलिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, मगर आप उल्टा भी देखो कि लोग लड़ाई कर रहे हैं इसीलिए हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं. मतलब nobody has actually, मुझे नहीं पता, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई बिफोर दिस थिंग मुझे ऐसा लगता था कि स्ट्रेस में आदमी गलती करता है, बट ये एक स्टडी में प्रूवन होगा या लोगों ने कहा होगा ऐसा यार, इफ इट इज देयर इन प्रूवन इन द स्टडी, समथिंग हैज टू बी डन to sort of take care of I'm surprised that nobody has actually raised this question that abuse or violence should be, it is beyond human rights, it is beyond that. मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे साथ कोई वॉयलेंस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके पेशेंट के साथ जो हुआ, बट जो बाकी पेशेंट्स है मैं उसके साथ मेरी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं होगी कि मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा. So I think something very seriously has to be done for this. Actually, there are laws that you cannot do violence to the hospitals. You cannot break the laws. And hospitals, including our hospital, has displayed the duties of a patient, right? You have the right, that is okay. Every patient has got a right, but wherever there is a right, there is a duty associated with it. So we have on chart demonstrated on a wall the duties of the patient. But I'm pretty sure 99% of the people don't even read after reading the heading what is written there. No, विपुल देखो, मैं ये जो बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई
हम ये कह रहे हैं, सी वी आर नॉट बियॉन्ड लॉ, नो डॉक्टर इज बियॉन्ड लॉ, है ना, और नो ह्यूमन बीइंग इज बियॉन्ड लॉ। पर मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यार somebody has to go there and address the issue that a doctor is not responsible for one patient, a doctor is responsible for several patients। अब आप अगर उसको इतना अनड्यू स्ट्रेस कर दोगे तो वो जो एक जो पेशेंट के साथ प्रॉब्लम हुई वो तो है, बट जो बाकी के 9 पेशेंट्स हैं उनका भी देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो इट विल बिकम अ परपेचुअल ऑनगोइंग प्रॉब्लम। So Absolutely. I think something of that sort has to be done, and people have to look at कि it is not an index patient। मतलब आज जो 10 लाख डॉक्टर हैं इंडिया में, 10 लाख या कितने जो जितने भी हैं, आई थिंक 10 lakhs और 50 lakhs और whatever they are, मतलब जितने वही 140 करोड़ का ध्यान रखने के लिए रोज तो नए आ नहीं सकते। बॉस कमिंग टू, so we have established the base of this problem। Khandelwal was, do you actually see that can there see doctors know क्या एंजाइटी होती है, क्या इलनेस होता है, क्या डिप्रेशन होता है, एंड दे वुड वो कहीं ना कहीं अपने सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे तो भी कहेंगे नहीं यार बॉस कुछ स्ट्रेस है ये वो। सो इज देयर अ डू वी हैव अ स्क्रीनिंग सिस्टम फॉर डॉक्टर्स व्हिच इज डिफरेंट to a normal sort of human being screening system, और जो डॉक्टर का स्क्रीनिंग सिस्टम है वो भी सेम ही है आपके हिसाब से? नहीं, क्या है कि एक बार आपका क्वेश्चन वापस पूछो सर, इसकी थोड़ी सी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मैं जानता हूँ कि अगर मैं ये कहूंगा कि बॉस मेरे सुसाइडल टेंडेंसी है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसी नेगेटिव थॉट्स हो रही हैं, मुझे पता है ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे पता है आपको वो डिप्रेशन है, तेरे को ये वो, बट मैं आपके पास एक बॉस मुझे मतलब मैं तो कहीं ना कहीं उसको कैमोफ्लाज, मेरी प्रॉब्लम्स को कैमोफ्लाज करके लेके आऊंगा ना आपके पास सारी की सारी चीजें, बिकॉज हमारी हमारी कंट्री में, मतलब हमारे कल्चर में, कंट्री नहीं कहूंगा, हमारे कल्चर में डिप्रेशन इज अ वेरी बिग टैबू। तो आपके पास कोई अलग स्क्रीनिंग टूल होता है डॉक्टर्स के लिए कि यार इसको डिप्रेशन है या इसको मेंटल हेल्थ इलनेस है, और इस ये ही इज जस्ट गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, इसमें क्या है, एज सच कोई अलग डॉक्टर्स के लिए स्क्रीनिंग टूल तो नहीं है, बट अपन क्या करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम साइकेट्रिक हेल्थ या बॉस म्यूट हो गया आपका। हम जो है सजग रहें। हम रेगुलरली जो है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एजुकेशनल मीटिंग्स करते रहें, सेमिनार्स करते रहें, छोटी छोटी कंसल्टेंट्स के साथ या दूसरे स्टाफ के साथ 1-to-1 जो है या ग्रुप मीटिंग्स करते रहें, जिसके अंदर अपन उनके साथ जो है इमोशनल इश्यूज को डिस्कस करें, अपन उनको एजुकेट करें कि देखो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज। तो सबसे पहले तो अपन इलनेस और सिम्टम्स के बारे में एजुकेट करें। अभी जो एजुकेट करना है इट इज बाय मीटिंग, सेमिनार, है ना, या अपन एजुकेशनल मटेरियल भी डिस्पेंस कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो है एजुकेट करना। एजुकेट करने के बाद जो है हो सकता है काफी सारे लोग जो है वो रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे। अच्छा, दूसरा फिर है उनको ये बताना है कि हेल्प इज अवेलेबल, है ना, अगर अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो दिस इज द पर्सन, आप उनसे बात कर सकते हो, है ना, ही इज देयर टू हेल्प यू आउट। और अपन उनको ये भी एजुकेट करें कि भाई आपकी प्राइवेसी और उस सब चीज को हम अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो एजुकेशन और मीटिंग, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगी। अच्छा, तीसरा क्या है, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम अगर किसी में देखें तो जो कलीग है वो भी ऑब्जर्व कर सकता है। आप किसी को देख रहे हो यार, वो अपने ओपीडी चैम्बर में बंद करके बैठा है, सिर पकड़ के बैठा है, बोल रहा है यार थोड़ी देर मुझे हेड डाउन करने दो, हेडेक हो रहा है। तो अपनी ड्यूटी है कि अपन रीच आउट करें उसको,
जब भी हम किसी को परेशान देखें, अपसेट देखें, इरिटेट देखें, लैक ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति में देखें, तो एज ए कलीग भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको रीच आउट करें, उससे बात करें, और बात करने से ही जो है ही विल ओपन अप, ही विल डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स, और फिर अपन जो भी सपोर्ट हेल्प जो है वो उसको ऑफर करें। जैसा डॉक्टर विपुल ने कहा था ना कि कई बार कंसल्टेंट आके कहता है आज तो मन नहीं कर रहा, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ये रेड फ्लैग है ना। ऐसे लोगों को फिर अपन को छोड़ नहीं देना है ना। अगर अगर कहीं भी अपन को ऐसा मिलता है तो अपनी फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि अपन उनके साथ थोड़ी देर बैठे, है ना, नॉन जजमेंटल सपोर्टिव तरीके से अपन उनके साथ बात करें, और बात करने के साथ डिस्कस करें, सपोर्ट और हेल्प इसको ऑफर करें, तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प एंड मैनेजमेंट। If a person wants to know he's suffering from anxiety, एक मिनट मैं question है, let us take the question now only. If a person wants to know he's suffering from anxiety and he already know about that, it takes long time to improve himself, he is not interested to take help of other person. Sorry. सो कह रहे हैं कि एंजाइटी वाला हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक डॉक्टर सेहरा इज ट्राइंग टू से पीपल आर नॉट रेडी टू टेक अ लॉट ऑफ हेल्प। नहीं, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स जो हैं एक्चुअली दे आर मोर देन विलिंग टू टेक हेल्प, है ना। ओके। लेकिन डॉक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दे आर वर्स्ट पेशेंट्स दे देमसेल्व्स। अगर डॉक्टर्स को डायबिटीज भी हो जाएगी खुद ट्रीट करेंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा तो ट्रीट करेंगे, फिर वो इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है और उसके जो है नेगेटिव आउटकम होते हैं। ये अपन देखते हैं, ये अपन अपने डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं, है ना। अगर सर्जन को भी डायबिटीज हो जाएगी तो खुद ही अपना कुछ कर लेगा, या बीपी भी हो गया तो कुछ कर लेगा। मतलब डॉक्टर्स एक तो सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं जो कई बार इनएडिक्वेट होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है, या वो अप टू द मार्क नहीं होता है। तो सिमिलर विद दी साइकेट्रिक इलनेसेस, है ना। किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो क्या है, कई बार तो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सेल्फ ट्रीटमेंट है वो कई बार जो है वो एडिक्वेट नहीं होता है, एंड इट डज नॉट हेल्प। तो ये एजुकेट करने की जरूरत है, देयर आर कंसल्टेंट्स जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड दूसरा अपन को ये भी मैसेज देना है कि एक्चुअली दे आर इलनेसेस, है ना, दे आर साइकेट्रिक इलनेसेस आर इलनेसेस लाइक एनी अदर इलनेसेस, लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, वैसे ही इवन साइकेट्रिक इलनेसेस आर बायोलॉजिकल इलनेसेस, चाहे वो डिप्रेशन हो चाहे एंजाइटी हो। तो बॉस मैं डॉक्टर विपुल कमिंग टू यू, I would say that there is a colleague who is sort of whom you think has got some psychiatric or mental health issues. Let's not call it psychiatric. The right word is mental health. How will you approach it? What exactly would you do? I'm talking about a very practical thing. There are a lot of us here. What all would you do to help him? So if you have read that article, Dr. Sachin, one thing was very deeply highlighted in this article, that the cause of these disorders, one of the causes was lack of empathy, if you have read it, right? So this shows that the study showed that there is a lack of empathy from the side of seniors for the juniors, number one, from the side of doctors to the patients, number two. So if you ask me that a colleague is having any of these problems of mental illness or health loss of mental health loss, first of all, you should try to have empathy for that colleague. It is not sympathy, right? Sympathy is a different word. Empathy I'm talking about. Empathy means that you should understand what it feels like being in his shoes. You should understand. The most important thing to have empathy is have the power to listen to what he has to say. Many of the people don't find good ears, right? This is a big problem.
I have a problem I cannot share with someone. So become a good listener for that patient or for your colleague, whosoever he or she is. Have empathy towards that particular person. Listen to his or her problem. Try to correlate. Sometimes the things are solvable, but the response has been exaggerated, right? So if the things are solvable, try to solve either by yourself or through including other doctors or the department or the management. I think majority of the things can be settled out across a table, sitting on a table, and telling that colleague that things are not so bad as you have imagined them to be. Everything has एक got a एग्जांपल solution. दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाँ, बिल्कुल, है ना? Suppose you see, you and I work together. You see, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. You see, me behaving erratically, you know, whatever, you know, रूम में बंद हो गया, लोगों से बात नहीं करना, गुड मॉर्निंग नहीं कहना, मे बी कुछ पता चला कि स्लीप डिस्टरबेंस है, ये वो whatever, रात को 3 बजे ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, रात को 12 बजे कर रहे हैं, whatever. You know, I'm talking very practical, not theoretical. What will you do? so first of all I'll come to you कि बॉस प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली ये बताओ, what is your issue? Are you really sick or it is a temporary phase or something is going in your mind? I still say that I have realized that something you're not behaving normally these days, right? You are not like this maybe 10 days or 15 days back. Something is going wrong. So something is there which is troubling you. Let me find out if I can help regarding that. Naturally, you'll not come up in one time. Maybe I can have a cup of coffee with you. I can sit down for 10 minutes. Even I stop my outdoor and my OPD. Or I'll try to find out that person whom you can confide in. Maybe some of your family members, I'll give them a नहीं, ring you that I'm know not. everybody. Yeah, Whom yeah, will you that's what I'm contact? saying. So जैसे I'll give कौन? a, I'll for you. Shinu? Of Shinu course या not. पापा? Of course not. पापा? Yes, of course I'll call him. कि सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं आज, मुझे तो बता नहीं सर, एक बार आप भी आ जाओ, let us talk to him, something is going wrong. Because unless you speak out, I'll not call Dr. Rakesh first of all, right? So I'll try to figure out कि अगर प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो रही है तो इसको यहीं अर्लीस्ट इसको सॉल्व किया जाए. And believe me, majority of things will be solved if you sit across with 2 or 3 people of your confidence. So I'll try to find out what is going wrong. If at all you are not coming up, then maybe I'll seek some help with your colleagues. कि यार कोई डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई केस तो नहीं खराब हो गया, या कुछ इशू तो नहीं हुआ, किशन कुछ हो तो नहीं है यार, बॉस को किसी ने कोई फोन वोन तो नहीं कर दिया, कोई केस वेस का कोई जवाब तो नहीं आ गया, कोई नया नोटिस वोटिस तो नहीं आ गया. और आई ट्राई टू फाइंड आउट विद विनय कि यार कुछ फाइनेंशियल का कुछ हाँ, बड़ा लफड़ा फाइनेंशियल इशू तो लफड़ा कुछ तो बड़ा नहीं तो है. नहीं हो गया यार, कुछ ऐसा क्या हो गया, कल तक तो सब 2-4 दिन पहले तो सब ठीक था, व्हाट्स गोइंग ऑन? If not at all, if I am unable to find out, then maybe the next person to call is Dr. Rakesh कि बॉस आप संभालो, अब ये बॉल अपने कोर्ट में, तो I'm not able to handle this ball. But I'll not let you alone, right? I'll find out, I'll try to my level best what's going on and we have to sort it out. So I'm sure with everybody's effort, we will be able to bring out that person to normal. दीपिका, एक बार डॉक्टर हुजा को अनम्यूट कर देंगे प्लीज. खंडेलवाल सर, एक चीज बिफोर यू नो, वी विल नॉट टॉक डिटेल ट्रीटमेंट हियर in the last 4-5 minutes. If anyone, if any of the colleagues wants to you know, put in a word or ask a question, we can unmute and do that. It's a, आज मैंने कहा कि यार आज कुछ लिमिट नहीं रखेंगे, इसलिए डॉक्टर विपुल को कहा था सबको मना कर देना 8 बजे बाद. सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब खंडेलवाल सर, आपने जो भी कुछ ट्रीटमेंट आप चालू करेंगे, सो हाउ डू यू टेल और हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस पर्सन इज यू नो गुड टू वर्क, और जैसे कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी है, व्हेन डू यू एक्चुअली एडवाइज देम टू स्टॉप वर्किंग, और मतलब कैसे इस, बिकॉज अगेन ये काम ऐसा है कि you know how profession and management of disease goes together. खंडेलवाल सर. सर क्या है, इसमें डिटेल हिस्ट्री जो है वो बड़ी हेल्पफुल रहती है ना, कि अभी पिछले कितने दिनों से चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, स्लीप कितनी है, एपिटाइट कितनी है, एनर्जी लेवल्स कितने हैं, एंजाइटी लेवल्स कितने हैं, है ना. और फिर उसके कारण हम ये भी समझते हैं कि सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल जो है जो डिस्टरबेंस है वो कितना हो रहा है ना.
तो ये हिस्ट्री के और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई अल्कोहल ले रहा है, डेली ले रहा है, या कोई और ड्रग अब्यूज ले रहा है, डेली ले रहा है, अब हम उसको बंद करने की सलाह देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स भी होंगे। तो उसके हिस्ट्री, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसके कोमॉर्बिड फिजिकल इश्यूज, उस सबको देखते हुए फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई विद ट्रीटमेंट वेदर यू कैन कंटिन्यू वर्क और इट इज वाइज कि यू टेक अ ब्रेक। बहुत सारे लोगों को हमने जो है अपने यहाँ पे भी सजेस्ट किया है कि भाई टेकिंग अ ब्रेक टिल यू इम्प्रूव इज अ वाइज आइडिया, और लोग मानते भी हैं उस बात को। Good. Huja sir, you wanted to do a comment. It was something very interesting. Well, Huja, I've just put in a little chat put it on the chat. हाँ बताइए ना. Basically, can you hear me out, all of you? हाँ, we can hear you loud and clear. अच्छा, basically मैंने तो ये डाला है कि एक तो क्या है कि see what I see between when I started out as a working as a doctor and then now, there are 3 or 4 important things. एक तो हमारे टाइम पे mobiles and computers इतने होते नहीं थे. So it was a very face-to-face, close interpersonal reaction, and used to hang out with colleagues and friends, and that was a great stress buster. Wo ab now people are, I remember even in Apex Hospital in the duty room, we used to sit around in a common place, typically the side room near the old operation theater. और वहाँ पे जोक करना, क्रैक करना, एक दूसरे की टांग खींचना, and it can kind of gave us a sense of bonding, and we used to kind of de-stress ourselves with that kind of environment. Now in the same room, all of us are sitting in front of our mobile screens and just looking at whatever posts have come, and we are hardly talking with each other. So unless we talk, hang around, kind of do a little rib tickling, wo baithta nahi hai. That's one thing. The other thing is that what I find in today's generation of doctors, sorry, I have to say that, is that, they want to accelerate getting rich as quickly as possible. When I started out working, I used to come on a scooter. Then I bought a Maruti, then this thing. Now everybody wants to get a sedan in just 10 years of life, professional life, what I mean to say. And when that happens, it puts a lot of stress in terms of the hours you put in, the kind of professional ethics you put in, and you kind of very soon burn out, maybe in your middle 40s or by the time you are 50, you burn out. So that is the other thing which I wanted to state. And finally, what I wanted to say was that we must have some hobbies, whether it is music or running or gymming. These are great stress busters. And spend time with your family. It's a very important safety valve. That's all. Great. Thank you. So, Khandelwal sir, actually treatment, investigations, follow-up, relapse, ये अपने आप में एक बड़ा बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है. And again, what all of us can do to prevent it. Prevention भी एक बहुत important है. But मैं बस आपसे यही चाहूंगा कि लास्ट शायद इसको कंक्लूड करने के लिए, ताकि आज का जो एम है वो यही है कि यार इसके बारे में एटलीस्ट बात तो हो, मतलब पीपल शुड टॉक. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस नोट पे वेयर वुड यू लाइक टू एंड दिस सेशन? खंडेलवाल सर. देखो, जो बाय एंड लार्ज किसी भी अपन एक लेमैन के लिए भी बात करें तो उसके लिए जो स्ट्रेस को से मैनेज करने का जो तरीका होता है, मुझे लगता है डॉक्टर्स के लिए भी वो काफी हद तक वही तरीका काम करेगा, है ना. कुछ चीजें डॉक्टर करेगा, कुछ चीजें उसका इंस्टीट्यूट करेगा. डॉक्टर जो करेगा वो ये है कि अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान देगा. सबसे पहला काम. Most of the doctors are not taking adequate sleep. Most of the doctors, अभी तो 4-5 घंटे सोना आम बात है. फिर उस दिन में वो फटीग होते हैं, फिर वो एनर्जी एफिशिएंसी कम हो जाती है, फिर वो वर्किंग में कंसंट्रेट नहीं करते, फॉल्ट होना चालू हो जाता है. देन एपिटाइट, देन ड्रग अब्यूज से मुक्ति करनी पड़ेगी.
फिर उनको अपने लेजर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्या चीजें मुझे खुशी देती है ना। वेकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डे ऑफ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स आर नॉट टेकिंग डे ऑफ, which is very surprising, है ना। even I was not taking it for 15 years, रोज ही वर्किंग करते थे, सभी लोग कर रहे हैं। फिर ये रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। देन वी स्टार्टेड, नहीं पिछले 5 साल से 1 डे फुल डे ऑफ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, फैमिली टाइम, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, चिल्ड्रन। तो ये चीजें तो डॉक्टर को खुद को करनी पड़ेगी। और दूसरा जो आप म्यूट हो गए बॉस। करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, है ना, कि किसी ने 8 डे भी करी, फिर हम उसको कह रहे हैं नाइट भी कर ले, और फिर अगले दिन पता चले कि वापस उसकी डे ड्यूटी भी है। ठीक है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, रोज होती हैं। तो इंस्टीट्यूट को भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अनरीजनेबल वर्कलोड नहीं आए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेड फ्लैग्स। जब भी हम किसी को परेशान, इरिटेट, एप्रीहेंसिव, अपसेट, सुबह अपन देख रहे हैं एनर्जी नहीं है, हेडेक है, या अपन देख रहे हैं हैंगओवर के अंदर है, तो जब भी अपन ऐसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें, सपोर्टिव तरीके से उससे बात करने की जरूरत है। वेरी सपोर्टिव 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 तरीके से, देन ही विल ओपन अप। और रेगुलर अपन यहाँ पे अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इमोशनल हेल्थ के ऊपर रेगुलर बातचीत करते रहें, तब लोग सेंसिटाइज भी होंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। और फिर जिनको डिटेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट या एक्सटेंडेड काउंसलिंग, साइकोथेरेपी की जरूरत है, फिर उनको वो चीज करें। खंडेलवाल सर, डॉक्टर विपुल, मतलब एक्चुअली बातें बहुत सारी हैं। आई थिंक 1 घंटा और चल सकता है पूरा का पूरा सेशन, और मे बी फिर भी सारी चीजें खत्म नहीं हो। बट आई रियली थैंक बोथ ऑफ यू फॉर अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आपने बड़ी कंसाइज इंफॉर्मेशन दी। आई विल बी शेयरिंग, सो यू नो, एक सर क्विकली सुरेश का एक सेशन क्वेश्चन है, what is the age group for which doctors के लिए ज्यादा, I think Suresh has asked, what is the age group among doctors who suffer from stress most? देखो, इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर मोर सीन इन एडल्ट्स, है ना। Okay. अपन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एडल्ट्स में ज्यादा होगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो मिडिल एज के अंदर ज्यादा होगा। ड्रग अब्यूज तो सभी एज के अंदर देखने में आता है। चलिए, thank you all of you. Thank you Dr. Vipul, and thank you all for joining, and I'm sure we will be sharing this link on all the groups, and कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्टर कोलीग्स हैं उनको भेजें, और आई एम श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ अस कैन डू समथिंग to ensure कि our fellow colleagues and even ourselves are safeguarded from this. Thank you so much. Thank you. Thank you.